Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing well. Hope you're safe and enjoying the new lockdown, enjoying your office, enjoying your work, enjoying your education. I'll give 5 minutes for people to join in. अभी उनको notification गई होगी. Um, so yeah, this is my third session of live resume review. The point is to get your resumes, to review it over here because मैं theory बहुत बता चुका हूँ, बहुत videos लगा चुका हूँ, but बहुत सारे लोग उसको follow करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, उनको नहीं समझ आती. So मैंने सोचा कि why not take resumes and edit them live and fix them live and to share my thoughts as an HR professional, as someone who deals with this a lot on how it can be better. And probably you can also write your questions on how you can fix your resume. And if you're stuck on anything, you can ask me at this point in time. Is anyone here from the Learning Club? Acha, Sayyid Mohammed Bilal. Hi Bilal from Learning Club. Assalamu alaikum Bilal. SN, Waji, and another LinkedIn user. Assalamu alaikum. अच्छा LinkedIn से जो लोग देख रहे हैं, there is some issue with this streaming platform, so sometimes I don't get to see the name. Sometimes you won't get to see the video properly. Sometimes probably you won't hear me. So up to you. If you want to join, you can watch this live on my YouTube channel. So what I did was I got resumes. I posted on LinkedIn. I got the resumes from there. I shortlisted 4 people, and so yeah, I'll be reviewing those resumes. Also, I'll be reviewing. I'll be taking some resumes from the live audience over here. अब हमेशा इशू ये होता है, लास्ट टाइम जो मेरा फीडबैक रहा है कि आप किस बेसिस पर सेलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्लीज़ ना करें, हमने बाद में ज्वाइन किया था दिस. सो व्हाट आई डू इज आई रैंडमली स्क्रॉल and I see who is the most participating, and then I select. ठीक है. Wajiuddin is from the Learning Club. Anyone else from the Learning Club over here? People are still joining in. Shehbaz Hussain, how to join Learning Club? Can anyone tell him? It's a very secret club. Just kidding. You can join it. It's a club that I've created on Facebook. It's limited people relative to what I have on LinkedIn, and we share all sorts of issues, all sorts of ideas, vacancies, resumes, any professional help that anyone needs. They post over there, and then they get help. A lot of people have gotten jobs from there. Wes, so what is LC? LC is the learning club. It's a club that I created. मैंने उसकी पूरी description दी, I hope. Abdullah Riaz is also from the Learning Club. SN Siddiqui is also from the Learning Club. Okay. So definitely मेरी preference Learning Club की होगी. Resumes जो मैं select करूँगा अभी. I'm sorry guys, but for the rest, you can see how I review the resumes, and you can probably take out your resumes right now and fix it with me. एक ही बात है. हर चीज़ प्लेट में तो नहीं मिल सकती ना. थोड़ा सा आप लोग वो करें. Sayyid Mohammed Bilal is also here from the Learning Club. He has just shared his resume on LinkedIn. I have around 300-400 resumes with me in my inbox and my Gmail. But yes, मैं लर्निंग क्लब थोड़े स्पेशल लोग हैं, तो मैं उनको पहले प्रेफरेंस दूंगा. इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी यहाँ बैठे हुए हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ही पता चलेगी एंड में. सो डोंट वरी, यू कैन ईजिली फिक्स इट. आप अभी अपने रेज्यूमेज निकाल सकते हैं ऑन द लैपटॉप, और यू कैन probably take notes and then fix it later. Okay, why a resume is important? मैं हमेशा से एक भाषण देता हूँ इस वर्कशॉप से पहले. Resumes are important because that's your first impression, and you know first impression is the last impression. If you don't have your first impression sorted, your the potential prospective employer, they'll have a bad impression of you. And we all know statistic. It takes around 6 seconds, on average 6 seconds, to check a resume and to decide for a recruiter to whether to go forward or not. And you don't want to be neglected or rejected in those 6 seconds. And I'll tell you how in those 6 seconds you can try to make it in the next round. Okay, the tips that I'll give you, मैंने ये सारी वीडियोस जो हैं रेज्यूमे रिलेटेड, ये सब आपको मिलेंगी पॉइंट बाय पॉइंट ऑन माई यूट्यूब चैनल. बट पॉइंट उसको रिपीट करना मेरा पॉइंट नहीं है. मेरा पॉइंट ये है कि मैं इसको प्रैक्टिकली रिव्यू करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि कैसे बेहतर हो सकता है. ठीक है.
If you have any questions, you can put it over here. If you don't have any questions, you can just see how I review from the recruiter's eye, how I review the resume, and how you can probably fix your resume. Okay. Okay, I've given 5 minutes. Now I'll go to the resumes. Actually, I had given 10:30 as the time, but I've started at 10. So people will be like, why did you give us 10:30 as the time? Sorry, मेरी commitment है एक बाद में, so I just try to. I didn't want to ignore the session. I didn't want to postpone the session, so I just started it. Okay, so let me just open. अच्छा, format पे बहुत सारे लोगों के question आते हैं. I can easily give you 6-7 main points कि यार ऐसा करें आपको मैंने वीडियो पढ़ी है, but I'm not giving it right now. I want you to figure it out with how I see the resume. सबसे पहली चीज़ आती है question, okay sir, which format should we follow? What is the perfect format? Which format is the ideal one जिसको recruiters देख के they go mad, they go crazy? ऐसा कोई format नहीं है. देखें, eventually a resume is a summary of your life, and your summary should be crisp, should be precise, and should be good to the eye. It shouldn't be too wordy, too verbose. It shouldn't be weird. It shouldn't be ऐसा ना लगे कि sketch बनाया हुआ है. It shouldn't be too wordy. So as long as it's good to the eye, and if you like the format, it's good. So for people who, let's say, apply for something creative, or let's say graphic designing or art related jobs, like to have the resumes very colorful, or design savvy type, and that's fine. ऐसा कोई नहीं, मैं आपको format पक्का नहीं बताने आया कि ये format आप करेंगे तभी आपके साथ होगा. That's up to you. But what I can recommend is to keep it as simple as possible. So I'll just show you my, just give me a second. Yeah. Okay. Can you guys confirm if you can see the templates? Can anyone write? मुझे खुद आप लोग comments नहीं दिख रहा, so I'm just joining my mobile so I can see. Hi Mehtab, how are you? Mehtab again is a regular viewer all the way from Dubai. Thank you for joining us again. Okay, so you guys can see it. Oh yeah. So the template that I use, and which has been given to me by my university from LUMS, and मैं तब से यही use कर रहा हूँ, and I also like it because it's very simple, to the point, not that colorful. It just, if anyone is interested, they're going to be interested in the content, and no judgments on the colors or selection of colors with it, and the font. It's very simple and precise. So the upper section is when you write your details, your name, your address, your date of birth, your number, your email. No need to write your religion, and no need to write your exact address, gully or ghar ke number ke saath. You just need to write, okay, let's say you are in Gulshan Iqbal, Karachi. That's it. Or you can write DHA, Karachi, or Gulberg, Lahore, or F11, Islamabad, whatever. That's up to you. But no need to write exact address. Date of birth is important because the recruiter needs to see what age bracket you fall in, and if you fit in, if you're a cultural fit, because they have to see that you can gel in with the other people. Normally इतना ज़्यादा issue नहीं होता date of birth में, but yes, एक certain bracket हर position के लिए identified होता है. So for a management trainee position, probably you won't hire someone who is not a fresh graduate, probably max 1 or 2 years of experience. It's not like if you're 30 you can apply for management training. If the company wants, the company is open to it, yes, but generally as an okay. So this is the objective. 1 or 2 liner. Why is it important? आपने नहीं लिखना, ना लिखे, मुझे ये अच्छा लगता है because this just gives a summary. Okay, so for example, in HR profession, इसमें आप अपनी competencies and how you can contribute to the company.
करके बताते हैं. सो आपके नाम में मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, सिक्योर और रिस्पॉन्सिबल करियर अपॉर्चुनिटी फुली यूटिलाइजिंग टेक्निकल एचआर, जिसमें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि माय compensation and depending on the job that you're applying for. For example, utilize my compensation, my rewards, and leadership skills while making significant contribution to the success of your company. A challenging and rewarding logistics distribution center operation manager position within your company on a prior experience, इसमें आप ऐड कर सकते हैं prior experience of logistics, supply chain, etc. जो आपने technical competencies डालनी है, leadership ability and a commitment to professionalism would be of value. These are some examples. Main point क्या है कि आपने अपनी existing competencies some लिख देनी है 2-3, और ये भी लिख देना है कि आप contribute करना चाह रहे हैं success of the company में, or what you are looking forward to in your life या किस तरह. That's your objective. ठीक है, फिर एजुकेशन में आ जाती है. तो बहुत अच्छा, ये आपका जो सेक्शन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है. इसमें आप अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें डालते हैं विच यू वांट टू हाईलाइट. मैंने एज एन एचआर पर्सन working in a prestigious company like Engro, I have interviewed a lot of people, and I can guarantee you that not every time the entire resume is reviewed. चाहे रिव्यू हो भी रहा होगा या ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत दफ़ा जो है ना सॉलिड पॉइंट ढूंढे जा रहे होते हैं, अच्छा जिस पे बेसिस पे डिस्कशन हो सके. तो दिस इज़ द मेन एरिया. अब आपके ऊपर है, आपने एजुकेशन यहाँ डालना है. यू थिंक दैट्स योर इम्पोर्टेंट पॉइंट, श्योर, गो अहेड, पुट इट. इफ यू थिंक नहीं यार इस पे मुझे क्वेश्चन हो सकता है, और दिस इज समथिंग दैट कैन बी डिसएडवांटेज, यू कैन पुट इट इन द एंड. दैट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू पुट योर स्किल्स एग्जैक्ट, आपने जेडी देखी और आपने देखा कि इसमें स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है, you can put those over here so that once once the recruiter goes through or interviews you, they'll be like, okay, this is exactly what we want. Let's say Microsoft Excel, Power BI, या फिर आप टेक्निकल कॉम्पिटेंसी देख सकते हैं एचआर की, ट्रेनिंग एंड ओडी, और इंजीनियरिंग की, मेंटेनेंस की, ऑपरेशंस की, जो भी आपने. एंड देन कम्स योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, जिसमें मैं ये फॉर्मेट फॉलो करता हूँ. सिंपल, कंपनी, पोजीशन, टाइमलाइन. इससे ये बहुत ज़रूरी होती है रिक्रूटर को, गेट्स एन आइडिया हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंड in that position in that company, and then this, what exactly have you done there. So a lot of times the mistake that people make is that they put their JD over here, job description. No, that's not it. You have to put your what have you done, and with numbers. देखो numbers लिखे हुए हैं and with slight detail. इतना ज़्यादा भरना भी नहीं है इसे, but JD is what the job is supposed to do, and this is what you have done. So obviously इसमें JD का part आता है, but इसमें आप flavor डालते हैं with all the numbers. Okay. और ये chronological order में होता है with the most recent first. अच्छा, बहुत लोगों का बहुत सारे experience होता है, so if you want you can skip descriptions for some companies as well, or if you want you can skip a company as well. अगर आपको बहुत 40 साल का एक्सपीरियंस, आप कहते हैं मैंने एक जगह 2 साल काम किया था अपने 16 साल के करियर में, सो आई डोंट वांट टू इंक्लूड दैट, यू रिमूव इट. यू लाइक यार मुझे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सपीरियंस है ना, आई वांट द इंटरव्यूअर टू फोकस ऑन दैट. ठीक है. फिर आपके ऑनर्स एंड अवार्ड्स, योर प्रोजेक्ट्स and your hobbies, really important because this shows the human side of you. If you are a fresh grad, I would recommend to restrict it to one page. If you are an experienced professional, I would say max you can go is two pages. So the first resume that I got, that I selected from my post on LinkedIn, was Rahila Azar's. चले आप लोग भी देख रहे हैं. I want you guys, a lot of you have already seen my resume review sessions, and I want you to highlight, okay, what is good in this, what needs work. अभी आपको मैंने template भी दिखाया, so I'll give you guys 2 minutes. Yes, Zainab, you can add workshops. Just make sure it's relevant.
वैस क्राइटेरिया लर्निंग क्लब का यही है कि आप बस एक्टिव हो, यू कैन कंट्रीब्यूट टू पीपल, यू आर विलिंग टू हेल्प, दैट्स इट। बस मुझे लाइक माइंडेड लोग चाहिए थे। एक जगह लिंक्डइन इज टू पब्लिक, मतलब टू पब्लिक फॉर मी, बिकॉज मतलब अब आई हैव अराउंड 100,000 प्रोफेशनल्स इन माय नेटवर्क, सो इट्स जस्ट, मतलब अगर मुझे कोई डिस्कशन करनी होती है या दिस समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू दैट पब्लिकली, सो मैं अपने लर्निंग क्लब में करता हूँ, राइट। सो again, I mentioned format is not something that I'm gonna comment on. That's up to you, as long as it gives the message. I don't, it's like, even though the person can go, the recruiter can go and see, but I don't, I just like, it's like just a presentation नहीं होती है, initially आप वो page दे देते हैं, index page, seems like that. I don't know, I I think it's gonna be a repetition nature. So I'm not sure if this should, just give me a second. Like give me. So yeah. So I think this part can be shorter. ये space इन्होंने ज़ाया की हुई है for highlights. So individual with strong grip and knowledge of accounts, finance, internal audit work. Okay, professional. Okay, so अब आप ये देख रहे हैं, this doesn't make sense. Professional approach to problem solving, bring value to organization. Maybe what she meant was has a professional approach. That's grammatically not correct. अभी देखिए बीच में capital letter. So it's just, and it's too much. I think too much of information over here. The challenge is this needs to be done in max 2 lines. That's what I think. So what she means to say is individual with strong grip, knowledge of accounts, finance, internal audit work can help in solving problems and bringing value to organization through strong analytical and communication skills. ये वाली चीज़ is fine. I don't know. ये एक challenge होता है. You need to summarize it and then put it as an objective. Okay, professional. She comes straight to her professional certifications. Okay, okay. अब देखें इन्होंने अपने years नहीं लिखे. Which year did she do the masters or bachelor's or intermediate? Not cool. अभी जो मैंने आपको format दिखाया था, probably if she can follow it, instead of putting two things side by side to save space, she can follow that format and write her. This one. This saves space and gives the information as well. Okay, work experience.
Park the Qatar is a for order business partner and okay. ये देखें अब इसका पॉइंट क्या है, रिपोर्ट टू मैनेजर. Definitely you have to report to a manager, so you don't need to write this. अब ये देखें इन्होंने JD कॉपी की है, जॉब डिस्क्रिप्शन. So what she's put in everything over here. She put everything over here. Carry out comprehensive audit of an organization, including the risk assessment, planning, execution, reporting, ensure control management. So, इधर कुछ नहीं आ रहा कि इन्होंने like if she puts numbers over here, so if she says carry out comprehensive audit of an organization, probably she can write carried out or managed 7 audits of the company. Evaluated internal control systems और उसका impact भी साथ लिख दें. Prepared. अब ये देखें इसमें one more thing which is very important, don't mess the verb. So if the verb over here is a present tense or over here it's a past tense, और जगह पे था. Mostly what I do is I put a past tense. So I will write carried out, ensured, evaluated, obtained. अब बीच में prepares आ गया तो it's not aligned. Okay, and this is too much. I think इसको मे भी कट करें. अपने जो मोस्ट रेलिवेंट, अब लोग बोलेंगे रेलिवेंट हम कहाँ से निकालें. रेलिवेंट जिस पोजीशन पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन की ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ें और वो वाली चीज़ें यहाँ पर लिखें बस. ट्रस्ट मी, इट विल वर्क वंडर्स. वहीं आपकी जॉब दिलाने में आपके लिए काफ़ी. Okay, so a lot of people ask, is this important? Yes, this is definitely important, but this again I think is there are too many competencies, and this is also fine. But इससे जो है ना, पता है, देखें या तो आप जीरो हो या फिर आप अच्छे हो. You don't want to give that impression. Let's say this job requires budgeting and forecasting expert. Why would you write this over here? I am 50% good. That's very vague. What do you mean by 50%? Do you know? Do you not know? Do you know but you don't have experience? What exactly? So the best thing is just write this, the competencies like this. इतनी लिख दें और उसके आगे if you can write, just give examples. That's also good. इसको या तो आप skills भी बोल सकते हैं, competencies बोलना है वो बोल सकते हैं. अगर आपकी जॉब से रिलेटेड है ये, which आपका क्या बैकग्राउंड है, your ACC. So if this is directly related to your job, I don't think Adobe Photoshop is directly related to the job. So you need to cut it down and you see which ones are the most relevant. ठीक है. Relevant आपको कहाँ से पता चलेंगे? आप JD देखेंगे जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे आपको पता चलेगा. ठीक है. I hope people who are viewing this, you have opened your resumes and you're fixing yours or you're understanding कि हमें कैसे fix करना है, because trust me, this makes a lot of difference. This gives, जिसकी resume होती है उस इंसान की एक judgment बन जाती है दिमाग में. जो कॉपी पेस्ट करेगा उसकी अलग जजमेंट है, जिसने पुराना कोई फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है या अच्छा फॉर्मेट नहीं यूज़ किया उसकी अलग जजमेंट है, जिसने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेंक दी है. जिस तरह देखें यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फेंक दी. ये JD है. आई हैव रिटन JD, तो मुझे मैं देख के बता सकता हूँ. दिस इज़ फाइन. बट देखें, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. इसमें जब ये बंदा देखता है ना, आप लोग भी देख रहे होंगे लाइक यार बहुत इन्फॉर्मेशन है, कहाँ जल्दी जल्दी पढ़ना. So also one good thing is one thing that you can do is, so this point is identify and assess areas of significant strategic and business risk and provide advisory service to audit client. Advisory, annual audit plan, comprehensive audit report. आप देखने से क्या फ़र्क पड़ रहा है. सो whoever looks at this resume, उनको पता है अच्छा यार क्या किया हुआ इस बंदे ने. ऑडिट प्लान अच्छा चलो किए हुए, प्रिपेयर किए हुए, ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई हुई है. ओके, बिजनेस फाइनेंशियल रिस्क क्या किया हुआ है,
अच्छा असिस्ट किया हुआ मैंने, सो जल्दी जल्दी इंप्रेशन बन रहा है। कैपेक्स एंड ओपेक्स में आपने काम किया हुआ है, कैपेक्स एंड ओपेक्स। इसकी इंफॉर्मेशन भले आपने 2 पेजेस में कर लिया, दैट्स फाइन। आप ये देख रहे हैं इसका फॉन्ट अलग है, ये 11 पे है, ये 9 पे है, यू कैन सी। सो ऐसा लग रहा है जैसे आपने घुसाया हुआ है हर चीज़। तो इसको इन्फॉर्मेशन कम करें, देखें क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड से बस इतना रखें, इसकी मेन उस पर करें, इसमें नंबर्स डालें, हाउ मेनी ऑडिट प्लान्स डिड यू डू, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, वाज इट डन फॉर द फर्स्ट टाइम, कुछ भी लिखें, मैनेजमेंट अवार्ड हो गया, कुछ भी हो गया, जस्ट नॉट शुगर कोटेड बट यू नो बोस्ट इट प्रॉपरली। इसी तरह आपका ये एक्सपीरियंस है, अगेन आपने जेडी कॉपी की हुई है, जस्ट मेक श्योर दैट यू पुट नंबर्स ओवर हियर, यू हाईलाइट। या इसमें एक चीज़ मिसिंग है विच इज़ हॉबीज़, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये लैंग्वेज का सेक्शन अनलेस उस जॉब की रिक्वायरमेंट है कि यार हमें बताएं कि आप मतलब इट्स अंडरस्टूड, अगर आप रिज्यूमे भी इंग्लिश में बना के दे रहे हैं और पाकिस्तानी है तो आपकी उर्दू और ये अच्छी होगी। जॉब की रिक्वायरमेंट है कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज ज़रूर लिखें, बट यहाँ पे आप हॉबीज़ लिखें। हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट शोज द ह्यूमन साइड ऑफ यू। व्हाट डू यू गाइस थिंक, कमेंट्स में लिखें। अब्दुल्ला रियाज सेज आई बिलीव स्किल्स आर गुड इन दिस रिज्यूमे। स्किल्स हैं सही, बिल्कुल सही हैं, बस ज़्यादा हैं। और जो इन्होंने ये किया हुआ है ना, ये आई डोंट थिंक शुड बी डन। इंस्टेड एग्जांपल्स आगे देनी चाहिए, you should not pour it in the resume कि 3 out of 5, 4 out of 5, it's very vague। क्या मतलब 4 out of 5? नहीं पता ना, दोनों को समझ नहीं आएगा। इससे अच्छा ये है कि लिख दें, फिर बाद में इंटरव्यू में वो पूछ लें। और अगर हाँ फर्स्ट पेज पे डालना है एंड दैट्स योर, या दैट यू थिंक इज द हाईलाइट ऑफ योर रिज्यूमे, देन शुरू में स्किल्स। अब्दुल्ला, हाँ द कॉम्पिटेंसीज आर वेटेड बाय सम दैट मैनी, यस। Umair noting all points which I need to fix. Great, Umair, keep doing it. Whereas work experience is just JD mentioned, no highlighted terms and achievements. Exactly. Great. ठीक है, नेक्स्ट रिज्यूमे पे चलते हैं। What do you guys think about this? And if you know someone who requires help, जिसको जॉब लेने में मुश्किल हो रही है, जिसको actively looking for job and wants to fix the resume, is not sure, doesn't want to spend money, wants to get it for free, तो आप ये लिंक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, whatever, किसी की हेल्प हो जाए, आपको भी सवाब मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। दिस पार्ट इज़ फाइन। हाँ लिंक्डइन पिछले वाले उसमें नहीं था, लिंक्डइन का आप लिंक ज़रूर डाला करें। वहाँ भी देखें, बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। एम्बिशियस, एनर्जेटिक एंड हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल एस्पायरिंग टू सिक्योर रिस्पांसिबल करियर अपॉर्चुनिटी इन an organization with keen focus on learning and growing in the field of human resources, funding company where I can apply my, क्या पढ़ा हुआ है आपने, HR है, my HR and it's not black and white as long as you mention your technical areas। अब ये भी मैंने एच आर नॉलेज लिखा है ना, यू कैन ऑल्सो राइट इफ ही इज, आई थिंक ये रिसेंट ग्रेड है या अभी स्टूडेंट है, सो दैट्स व्हाई आई रोट
HR knowledge, but you can also write, let's say, HR broadly. इसमें इन्होंने टाइमलाइन चले लिख दी है. That's enough. I think this is fine. He comes directly to professional experience. Says data analysis management. Good. 3 active projects. Okay, good. Student leadership 600 plus from great. अच्छा ये लग रहा है इन्होंने मेरी पहले ट्रेनिंग ली हुई है. ट्रेनिंग चेकलिस्ट ऑल देन लिखे नंबर लिखे यहाँ पे. कितना नंबर? लेट्स से 400. एग्जाम्पल लिखा है. कितना स्टाफ लिखे हैं? लेट्स से 300. देखें इम्पैक्ट चेंज हो जाता है. दिस इज ऑल्सो गुड. इन्होंने डिवाइड कर दिया. अच्छा you don't need to write I think roles and responsibilities. Even if you delete it, it's pretty self-explanatory. तो आपके पास और जगह आ जाएगी यहाँ. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. ऑब्वियसली people think differently as well. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ how I view the resume as an HR professional, जो मुझे important लगती है. JS Bank. ओके. verbs भी सही हैं. Okay, so actually if I had to rate this resume, I would, up till now I'll give it a 7 on 10. Sales and interest, soft skills, good यार. I really like this email. इन्होंने अपना नाम मैंने हटवाया था तो मैं खुद भूल गया हूँ किसकी resume है. But good यार, good effort. Probably just give more space here. थोड़ा सा कहीं कट करें. थोड़ा सा सांस लेने की जगह हो. बहुत घुटा लग रहा है. And you can cut something. Format font छोटा कर सकते हैं just to see it. एक पेज में आ जाए. Good. What do you guys think? What was the difference पहले में और अभी में? वजीउद्दीन, ये आपकी रेज्यूमे है? अच्छा वजी, आप किसी ने लिखा है isn't it necessary to mention GPA? GPA आप तब लिखें जब आपकी GPA अच्छे हो. आपकी GPA is something that can be questioned on or commented on, and if you think it's not in the upper quartile or even 3 above, I wouldn't recommend कि आप लिखें. You don't want the interview to go in a different direction. मेरे साथ बहुत दफ़ा हो चुके हैं इंटरव्यू डिफरेंट. मेरे स्किल्स अलग हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट अलग है, मेरे GPA में 10 मिनट निकल जाते हैं. So you don't want that. So I wouldn't take that risk. Oh, bad. But one thing, she mentioned his professional experience in one line. Is it okay? कौन सा प्रोफेशनल है एक लाइन में?
आई थिंक व्हाट यू मीन इज कि ये एक एक लाइन में लिखा है। देखिए इन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट फॉलो किया है। इन्होंने इन्होंने डिवाइड कर दिया अपना एक्सपीरियंस इन सेक्शंस, सो इट्स इजियर फॉर द रिक्रूटर टू सी ओके व्हाट टाइप ऑफ वर्क दिस गाय हैज डन। इट्स नॉट नेसेसरीली बैड। अगेन देखिए फॉर्मेट आपकी मर्जी है, एज लॉन्ग एज इंटरव्यूअर को समझ आ रही हो। नो प्रॉब्लम वजी, यू डोंट ओ मी एनीथिंग, जस्ट आई एम ग्लैड यू मेड द एफर्ट। इस रिज्यूमे को देख के लग रहा है कि आपने जो मैंने पहले ट्रेनिंग दी है और कंटेंट वीडियोस डाली हैं वो आपने देखी है, बिकॉज ऑनेस्टली इसमें बहुत कम मुझे चेंजेस करनी पड़ी। इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। आई नो दैट यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। इस रिज्यूमे को देख के लग रहा है। ओके, लेट्स गो टू उमर खयाम रिज्यूमे। हाय सुहेब। अच्छा, अब ये देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है, 2 पेजेस में है। ठीक, to utilize our knowledge and skills in challenging dynamic environment। अब ये देखें आगे वही चेंज हो गया। डॉट ओके प्रोवाइड and to contribute। लिंक्डइन का अगर लिंक भी डाल दे तो अच्छा है। अच्छा, इन्होंने एक चीज़ की हुई है, देखें इन्होंने एक पूरे पेज पे अपनी सिर्फ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन डाली। व्हाट डू यू गाइस थिंक, इज दिस फाइन? सो उमर हैजंट फोकस्ड ऑन इधर जी, कोर्सेज भी नहीं लिखे हैं। अगर लिखे तो अच्छा। आई थिंक एजुकेशन में, चलो आपने वैसे पेज आधा किया होगा। पर्सनल प्रोजेक्ट्स, contingency analysis of K-electric EHD network using ETAP loss calculation skills। बहुत ड्राई लग रही है रिज्यूमे। देखें इधर भी आपने नंबर्स नहीं डाले, जेडी कॉपी किए, कोऑर्डिनेट कैरी आउट। अब ये देखें यहाँ पे पास्ट टेंस शुरू हो गया। दिस इज व्हाट pisses ऑफ द रिक्रूटर्स। इट्स वेरी टाइनी minute details, but this shows about the attention to detail of the person। अब आपने पूरे एक पेज में अपनी सारी लाइफ डाल दी और इधर आपने सर्टिफिकेशन डाल दी। इसको आप छोटा करें, इसका फॉन्ट छोटा करें। एंड हॉबीज़ आपने कहीं नहीं डाली। अब देखें ना, ये आपने अच्छे तरीके से यहाँ बताया हुआ है। इसमें अगर आप डाल देते कितना बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क है, सम नंबर एंड if you start a new sentence at least put a semicolon। इधर नंबर्स में लिखें, नंबर्स नहीं लिखे हुए। सो व्हाट इज योर रोल, इसको बड़ा करने की कोशिश करें, जैसे बहुत बड़ा काम किया है। अगेन लाइक अब्दुल्ला रियाज इज सेइंग देयर नो हाइलाइट्स इन द एक्सपीरियंस पार्ट, सेम गोज हियर। दिस बहुत
आधा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, आधा बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें. सो या दिस इज़ माय फीडबैक. आई थिंक इसमें हॉबीज़ आनी चाहिए, इसमें स्किल्स पे आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ डालें, प्रॉब्ली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो हाउ डू यू थिंक, कुछ भी अपने स्किल के बारे में, हाउ डू यू थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स, आर यू पब्लिक स्पीकर, आर यू रिकग्नाइज कम्युनिकेटर, किस तरह होगा टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग का क्या, इज इट रेलिवेंट टू द जॉब. पहली बात तो ये जो आपने यहाँ लिखा है, इफ इट इज then what exactly makes you very skilled in this particular thing. और आपने यहाँ अगर देखें, अगर आप दूर से इसको देखें रिज्यूमे को, आपको दिख रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट साइज. आई थिंक दिस कैन बी. मैं फॉर्मेट पे कुछ नहीं बोल रहा, इट्स अप टू यू. जैसा पहले बोल चुका हूँ, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करना, एज लॉन्ग एज इट्स क्लियर. इनके पास और कोई अगर चलें सही एक्सपीरियंस वाला पार्ट ठीक है, बट जो मैंने बाकी चीज़ें बताई हैं वो आप देखें. Shiroz has a good comment. First page has, oh yeah, first page has 2 columns. Suddenly second page में सारे column change हो गए. So yeah, ये तो addendum लग रहा है, जिसमें additional resume ये लग रहा है. Good point, Shiroz. Tala Mahmood. Okay. Okay. देखें, good. 15-20 mechanical drawing by using solid, to the point. और अब information भी अगर और कुछ किया है as an intern. Project भी डाल दिया इन्होंने. Good. Good. I ओके. ऐसे रेफरेंसेस डालते नहीं हैं, बट यस लाइक इट टेक स्पेस, नॉर्मली लोग नहीं डालते. रेफरेंसेस वाला पार्ट जो है ना, वो नॉर्मली वैसे भी आफ्टर यू आर सेलेक्टेड और बैकग्राउंड चेक वो होता है. बिकॉज इंटरव्यू में शुरू में ना कोई रेफरेंस इस तरह लेता नहीं है कि आपके रेज्यूमे देखेगा, फिर किसी को नॉर्मली ये नहीं होता कि मैंने किसी का रेज्यूमे देखा है, देन आई कॉल people and then I'm like okay should I call him for the interview. ऐसा नहीं होता. आपको सीवी समझ आती है, आप एक बंदे को इंटरव्यू बुलाते हैं, and then once you're done probably you can call for a check, a background check, to take feedback. Okay guys, what do you think about this? Any suggestions? Tala, I think for me this is a almost a 9 on 10. I think. Yeah, so probably हॉबीज आपने डाल दी थी. यस, आप यकीन करेंगे इतनी छोटी सी जगह है, लेकिन इस पे इतने सवाल होते हैं, इस पे इतनी डिस्कशन होती हैं. एंड टू गेट यू to make you comfortable, the interviewer can focus on this for a long time, so that you can talk about something mutual, talk about something common, and then go to the technical side. Probably इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं. How many surveys, multiple की जगह कितनी applications. Yeah, but overall, like if person goes through this resume, they would know this guy is from mechanical engineering from Malaysia and has worked as an intern and as a student ambassador
and likes football, manga, documentaries, TV shows, and traveling. Good. Okay. This is a resume from the live audience. Abdullah, can you identify what is PEC? What do you mean by that? Personal number? Yes, Shiroz. I think LinkedIn का link अगर आप डाल सकते हैं ज़रूर डालें. That's your online resume. You should put it. Oh, तला यहाँ पर हैं. No problem, Tala. Best wishes. So yeah, what do you guys think about this resume? Oh yes, Hassan and Abdullah, you can put your council number. That's up to you. मुझे familiar लग रहा था, but I was like मैं फिर भी confirm कर लूँ कि PEC. Yeah. ठीक है, इस resume का बताएं. After that, I'll take one resume from ये भी live audience का, इससे पहले भी एक थी और एक और लूँगा मैं. अपने LinkedIn पे जाके I'll check किसने भेजी है, and then I'll call it a night. I have a career fair, I have a job fair, virtual job fair on Friday. With that, मेरे साथ volunteers हैं और मैं खुद हूँ जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं. Because बहुत last time I think we had 800 vacancies और वो 800 I think शुरू में 12 से 1300 थी, पर उसको फिल्टर करते करते और जो हमें relevant नहीं लग रही थी या फेक लग रही थी हटा के. But hats off to the team of volunteers who searched the internet, the learning club, newspaper, लिंक्डइन, जहाँ जहाँ से उन्हें जॉब मिलती है. ट्रस्ट में पूरे पाकिस्तान से जॉब थी उसमें, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड. सो इफ यू गाइस आर लुकिंग टू स्विच एंड यू लुकिंग फॉर जॉब, सो फ्राइडे को जरूर कनेक्ट कीजिएगा. या सुमैर अली खान, मुझे वैसे पर्सनली पता नहीं है कि इसका क्या फ़ायदा होता है इन द इंटरव्यू. इट्स नॉट लाइक योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ अ डिसाइडर. मेरे साथ तो कभी ये नहीं हुआ, बट अब भी अगर जगह है तो देखते हैं. मैंने तो नहीं देखा कभी, ना मैंने कभी किसी को नंबर स्टाइल लिखते हुए देखा है. बट या बहुत सारे लोग पूछेंगे पिक्चर लगानी चाहिए, नहीं आपकी मर्जी है. देखें आजकल लिंक्डइन आ गया, सो एनीवेज योर पिक्चर virtually there, so up to you. I personally don't recommend putting a picture. It creates a bias, so just don't put. बाकी आपकी मर्जी. This is a bit long, the summary. 3 years of experience in one of the grammatically. Always get your resume checked to grammatical error or the worst errors. इसको चेंज होना पड़ेगा. इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना इनकी, हेल्थ एंड सेफ क्वालिटी एश्योरेंस है इनका मेन टेक्निकल स्किल. फोकस ऑन दिस, बल्कि इनफैक्ट यू शुड फोकस ऑन दिस एंड दैट्स इट. इसके अराउंड अपना कोई समरी बनाएं. Whatever you want to write, an individual with unmatched, नहीं unmatched बहुत ज़्यादा हो जाएगा. An individual with a lot of attention to detail, with focus on attention to detail, with focus on detail,
and who believes in utilizing his skills in health and safety, quality control, audit and inspection in a reputable company. अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यही जगह जो है ना आप काम करके इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. गेट इट. अब आपने मिक्स हॉचपॉच बना दिया. 2020 ये 2012 से 16 2010 and 12 it just doesn't look good at the eye. So people who are writing when can I review your resume? यार देखें मैंने अपना पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे, मैंने वहाँ से शॉर्टलिस्ट की थी and then I picked some resumes from the live audience. I plan to do this frequently. So don't worry, कभी ना कभी आपकी बारी आएगी और अगर नहीं भी आ रही तो आप एटलीस्ट अपने रेज्यूमे पे काम करें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ उससे बेसिस पर. सो या द स्किल्स अब देखें इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके स्किल्स डाल दिए. नो इन्फॉर्मेशन. आई थिंक मैक्स 5 to 6 स्किल्स होने चाहिए. Write some detail on how you're great at equipment selection, tool and equipment maintenance, troubleshooting, quality control, how you're good at it. How do you want to show it? ये भी इन्होंने भर भर के डाल दिए हैं. चलें ठीक है, इन्होंने अगर पहले अपनी स्किल्स डालनी थी और सर्टिफिकेशन, आई वुड रेकमेंड वर्क एक्सपीरियंस स्किल्स के बाद डाल दें. यार उसामा आपकी मर्जी है. इफ़ यू थिंक योर स्किल्स आर डिसाइडिंग फैक्टर. देखिए स्किल्स पहले डालना भी बुरी बात नहीं है. आप उनकी जो जॉब पे अप्लाई करें ना, यू चेक के व्हाट इज रिक्वायर्ड ओवर देन यू पुट दो स्किल्स और उसके आगे आप डिटेल भी डाल देते हैं. सो इफ़ यू राइट training in OD and then you write conducted 12 customized group level training, तो मैं इस तरह करके अपनी डिटेल आप डाल दें तो बुरा नहीं है. अगर इन्होंने लिखा है टेंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो आगे लिख सकते हैं कितने इन्होंने ऐसे टेंडर्स मैनेज किए हैं. वो एक्सपीरियंस. तो ये 3 लाइन्स इन्होंने ज़ाया कर दी. अब सीधा सीधा QHSC इंजीनियर लिखते हैं यार. ये फॉर्मेट कंपनी पोजीशन टाइमलाइन 3 लाइनें ज़ाया कर दी. मतलब एक में हो जाता, 2 में. अगेन JD. ओ माय गॉड, 1.5 पेज की. कुछ समझ आ रहा है कि इनका क्या इम्पैक्ट है कंपनी का. असिस्टिंग ING प्रेजेंट टेंस. अब देखना बीच में कहीं पास भी हो जाएगा. टू अटेंड फ्यूचर में भी चलेगा. अच्छा नहीं. हेल्प्स मेजर रिवैम्प रिक्वायर्ड. बट अगर मैं इसको समराइज करके बताऊं सो जस्ट कीप इट this length. Focus on numbers. If you're writing, just focus what exactly was the impact and main things that you did while being a QHSC engineer. So if you are like, अच्छा यार ये मेरा बहुत important point, I need to write this. So you carried out. Carry का क्या मतलब है? You managed it, you prepared it, you helped, you assisted. ये verbs use करना है. उस idea होता है बंदे ने क्या किया. How many internal audits? Let's say 10. Let's say all नहीं लिखे हैं. For the time being now, just a second.
Yeah, so see, too many clients, and I don't even know if this is relevant over here for the job that he's applying for. Maybe दो तीन चार clients डाल दें एक line में. Okay, if this makes a difference, sure. ये देखिए कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने एंड में डाली हुई है. पासपोर्ट की ज़रूरत है नहीं डालने की, रिलीजन कभी भी नहीं डालना चाहिए. चलो मैरिटल स्टेटस स्टेटस डाल दें, CNIC कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ये शुरू में जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे. ऐसा लग रहा है कॉपी पेस्ट इन्होंने किया और देखा भी नहीं है ये क्या लिखा. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ वेरी वेग. ये पार्टिसिपेटेड वगैरह सही है, बट उसमें आपका क्या होता है, क्या सीखा. कुछ तो लिखें, कुछ एक्स्ट्रा दिखाएं. इन्होंने बस चीज़ें भरी हुई हैं, बट आई होप उमैर आपको इस इन्फॉर्मेशन के बाद आइडिया हो मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरह समराइज़ करना है. मैं फिर से आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ. जस्ट मे बी सी दिस टेम्पलेट, राइट अकॉर्डिंग टू इट, लिमिट इट टू 2 pages एंड देन मे बी गेट बैक एंड यू कैन सी किस तरह आपको हेल्प कर सकते. ठीक है गाइस, आई सीन 5 रिज्यूमेस जिसमें से 2 लाइव ऑडियंस थे एंड बाकी फ्रॉम माई लिंक्डइन पोस्ट. Again, if you want to go in detail, what are the important 7 important or 6 important points that recruiters see in a resume, वो आप मेरे YouTube पे जाके देख सकते हैं. Apart from this, resume is your first impression, but that does not guarantee you a job. To get a job, you need to have great interviewing skills, have a great network, should have great technical and soft skills, have a great resume, should be a cultural fit. ये सारी चीज़ों का आपको काम करना चाहिए. जब तक आप ये सब चीज़ों पे नहीं करेंगे आपको नहीं. I'll be having a personal branding workshop as well. I hope to see you guys there because वो एक important part भी है, the sixth part, the magic six that I say. Um, how to create a social brand, how to create your brand on LinkedIn so that a lot of people can view you, not only in Pakistan but abroad as well. I don't know. I think I'll do it day after tomorrow. And on Friday, I'll be doing my career fair, job fair, जिसमें I'll be posting all the vacancies from Pakistan, from all departments, sorted city-wide. So probably that can be of help. I hope you guys, जो इसका पर्पस था सेशन का वो यही था कि मैं आपको रिज्यूमे रिव्यू करके दिखाऊं और आपको आइडिया हो कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. I hope it helped. If you have any questions, you can post it over in the next session. I will start with the answers for those sessions. Thank you so much.